Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Tuesday's edition of Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इन खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Manoj and Sushma ji. Welcome to the program. A quick look at the headlines. Key domestic indices rise more than 0.5%. Sensex closes at 72,186. Nifty settles at 21,929. Rapid reforms undertaken by the government making India a global destination for investment in the energy sector, says Prime Minister Narendra Modi. And provisions of the Anusandhan Research Foundation Act come into force. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, प्रमुख सूचकांक आधी फीसदी से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 72,186 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 21,929 दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने के लिए और एक ठिकाना बनाने के लिए सरकार की ओर से तेज गति से सुधार किए गए और अनुसंधान शोध फाउंडेशन एक्ट के प्रावधान देश में हो गए लागू। घरेलू शेयर बाजार में कल के चलन को पलटते हुए आज अच्छी खासी लिवाली की गई। हालांकि शुरुआती कारोबार में यह दिख रहा था कि किस करवट बैठेगा सेंसेक्स और निफ्टी, कहना कठिन है, लेकिन आखिरकार लिवाली से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। वैश्विक बाजारों से मिलाजुला संकेत मिला और इन सबके बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 455 अंक यानी 0.63% बढ़कर 72,186 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 158 अंक यानी 0.72% की बढ़त लेकर 21,929 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कहीं बेहतर दिखा। यहां पर बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 1.06% बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.23% लाभ में रहा। Key domestic indices ended more than 0.5% up amid mixed cues from the global share markets. The BSE Sensex gained 455 points or 0.63% to close at 72,186. The NSE Nifty climbed 158 points or 0.72% to settle at 21,929. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 1.06% and the small-cap index gained 1.23%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 19 companies appreciated while 11 declined. HCL Tech surged 4.43%. Maruti and TCS both climbed marginally by nearly 4%. Wipro rose 3.59% and Infosys added 2.52%. On the other hand, Power Grid fell 2.97%, IndusInd Bank lost 1.84%, and ITC declined 1.52%. In sectoral indices at the BSE, 16 sectors registered gains, while 4 witnessed losses. Oil and gas climbed 3.02%, information technology rose 2.94%, and the tech sector gained 2.74%. On the other side, power sector lost 0.39%, BankX fell 0.36%, and utilities slipped 0.27%.
The overall market breadth was positive as shares of 2,353 companies appreciated, while those of 1,508 declined. A total of 83 companies remained unchanged. Sushma ji, the market holding strong, and during the day we do see, in fact, for the last few days, that even if the market is going down, by the end of the day, it by and large is in an upward trend. So do you see a correction happening, or is this going to stay for some time? Well, I think the market has been a little volatile. Yesterday it was down and now it has stabilized once again. But right now I think the market is looking at, of course, two factors. First, of course, is the external factor where, there are very positive trends in global markets. China, for instance, which has been down for a long time, Chinese markets have rebounded after several months and reached a high of several months, and one of the reasons is that Xi Jinping has met the market regulator, and they have discussed ways in which the markets can, draw back from the heavy losses that had been taken place in recent times. So there is a lot of concern in China about the dip in markets. So this is something that is reflected. I mean, the uptrend in the China market has reflected in the European markets, not so much in the US, of course. So that is one factor, as I said, the external global factor. The other factor, of course, is that the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee has started its deliberations today. It will conclude on the 8th. And the market is expecting a very dovish approach by the MPC. Okay. Because, first of all, again, there is always a feeling that central banks of other countries tend to follow the trend set by the US Federal Reserve. Now, the Federal Reserve itself has maintained status quo. In the case of the RBI, it has not made any rate cuts for the last 5 meetings ever since February last year. And the repo rate has been kept at 6.5%. The anticipation is that the situation will remain as it is. Okay. We have to remember that the RBI's primary objective is to control inflation. And the latest data for December showed that inflation has risen slightly. It's come up to 5.7% in December, but it is still within the broad range that the RBI has set, 2 to 6%. So there's an anticipation that the MPC will maintain its status quo, which is again a positive indicator for the markets. यहाँ पर आइए नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 83 रुपए 6 पैसे के स्तर पर बंद हुआ है। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक बढ़त के साथ 104.56 पर चल रहा था। सुषमा जी, एक बार फिर से बाजार की गतिविधि पर आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे। कल भी हमने देखा जबकि बिकवाली हुई थी, और आज भी हमने देखा जब लिवाली की गई है, छोटी और मझोली कंपनियां, उनके प्रदर्शन अपेक्षाकृत सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहे हैं। यानी जो विस्तृत बाजार है वहां पर रुझान कुछ अलग चल रहा सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में। क्या हो सकते हैं मुख्य कारण इसके? देखिए, आजकल अगर आप देखें जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा रिसर्च करते हैं कंपनीज के ऊपर। जो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स अभी 2-3 साल से आए हैं, तो इसका मतलब है कि ज्यादा छानबीन हो रही है। ये सिर्फ ये नहीं कि पहले का जो सिलसिला था, जो इन्वेस्टर था वो ब्लू चिप कंपनीज के ऊपर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्हीं में निवेश करता था, लेकिन अब ये है कि ये अपनी हर छोटी कंपनीज को भी देखते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी आके कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती है। अभी हम जैसे स्टार्टअप कल्चर की आप हमें मालूम है, तो ये जो है जो ज्यादा मेरे ख्याल जो फोकस हो रहा है कि जो नई कंपनीज हैं या छोटी मिड साइज कंपनीज हैं, उनकी जो पोटेंशियल है, हमारे जो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ये देख रहे हैं, और मेरे ख्याल इस वजह से काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इस सेक्टर्स में। यहाँ पर क्या हम ये माने मैम कि जो
छोटे निवेशक हैं जो एसआईपी के जरिए इसमें निवेश किया करते हैं, क्या उनका रुझान है या जो संस्थागत निवेशक हैं वो इन छोटी कंपनियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? जो म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे ख्याल वो ज्यादातर एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि उनकी जो उनकी जिम्मेदारी है बहुत सारे लोगों के ऊपर, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादातर बड़ी कंपनीज में जाएंगे। अगर वो मिड साइज में जाएंगे तो काफी अपना देख रेख करके ही करेंगे। ये मेरे ख्याल अब हमारे जो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनके वजह से ये हो रहा है। So when, Sushma ji, we look at, and you spoke about research, which the retail investor is doing, and when we look at that, so how important is past performance? Because, public memory is short, and even media memory is short. So, for a person to do research, how far back should one go? What should one see? Because the latest events tend to dominate the market and the price. I think this is something that the retail investors are now, in fact, I would say that they are relying on a large number of online platforms which are giving them this kind of information. And if you are talking, of course, of a company which has been small for a very long period of time, it is, if it is going to move beyond the small sector, there has to be some dramatic development. Medium-sized companies, on the other hand, are those which probably have been growing. So it's difficult to say how far back you should go. Right. I think you have to see the current environment in which the company is working, the marketing environment, the resource environment, the inputs, all that you have to see. So it's more, I would say, the current scenario that is significant. यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि यदि हम अपने जो श्रोता हैं उनके नजरिए से या जो छोटे निवेशक हैं उनके नजरिए से समझना चाहें, तो वर्तमान जो माहौल चल रहा है जहां पर थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है फिर बाजार ऊपर उठता दिख रहा है, उसमें कौन से सेक्टर अगले 6 महीने के लिए यदि हम लेकर चलें तो 6 महीने में कौन सा सेक्टर आपको लग रहा कि उसमें अभी का किया हुआ निवेश बेहतर परिणाम दे सकता है? देखिए 6 महीने तो छोटी अवधि हुई, लेकिन फिर भी अभी आज के हाल ही में अगर आप देख लें तो आज के मार्केट में आईटी स्टॉक्स और तेल और गैस के उत्पादन की जो कंपनीज हैं उनमें उछाल आया है। ये ऐसी कंपनीज है, ये दोनों सेक्टर्स हैं, और तीसरा मैं इसमें बैंकिंग में जोड़ देती हूँ। ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग रन में भी, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी हमेशा आपको फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि आईटी क्षेत्र ऐसा है जहां डिमांड अभी तक तो यही है कि आईटी क्षेत्र में बाहर की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये ऑयल एंड गैस के जो क्षेत्र है वहां पर अभी प्राइसेस बढ़ रही हैं और रिफाइनिंग सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अच्छी कर रही है। और तीसरा बैंक्स का तो है ही है कि वो इनकी बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति 2-3 सालों में 3-4 सालों से बहुत ही अच्छी रही है। एनपीएस वगैरह नीचे आ गए हैं, रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है। तो ये लॉन्ग टर्म तरीके से अगर आप शॉर्ट टर्म भी देखें और लॉन्ग टर्म भी देखें, ये 3 क्षेत्र हैं। चौथा अगर आप फार्मा देख लीजिए वो भी बहुत अच्छा क्षेत्र है। Right. You spoke about the energy sector also. Our next story is linked to that. Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the second edition of the India Energy Week 2024 in Guwahati. PM Modi emphasized India's commitment to unprecedented levels of investment in the energy sector while addressing the gathering of global energy leaders. The Prime Minister underlined that the massive government spending in the sector will create new avenues for investment in India. So speaking about India's infrastructure spending, the Prime Minister said India is going to spend 11 trillion rupees on infrastructure. A large part of this will surely go to the energy sector, and we can see how India is continuously increasing its energy capacity, PM Modi said on the opening day of one of the most anticipated global energy conclaves. Highlighting India's central role in the global energy market, the Prime Minister said India, which is the 3rd largest energy consumer, is also the 3rd largest oil consumer, 4th largest LNG importer, refiner and automobile market in the world. So, Sushma ji, we are a country on the move, a country growing, and a population on the move. Energy is the baseline. So, we have these areas where we are increasing energy demands. In 2 parts. Firstly,
how self-sufficient are we likely to become, and how are we moving towards alternatives? Because there's a lot of investment out of the 11 trillion, and out of that which goes to the energy sector, which is going to green or other alternative energies. So when we talk about self-sufficiency, we have to look at the energy mix of the country. At as much as 46% of the energy requirements of the country are met through coal. Okay. Followed by 24% for oil, and then of course we come to a more green energy, that is biomass, 21%. So we are more or less self-sufficient, for instance, in coal. We do import some varieties of coking coal, but even in that case, now there's an approach that we should try and use Indian coal, and maybe try and use again research and development to try and improve the quality of the coal that we have, because our coal is has very high ash content. Okay. So coal is one. Of course, we have to move away from coal. You talked about green energy. That the aim is to do that, and we are definitely, our levels of the targets that we have for renewable energies are high, and we have been overachieving them. But when we come secondly to oil, which is the crude oil, which we are importing in large quantities, our requirements of crude oil, we are importing over 80% of them right now. And of course, this is relatively a cleaner fuel, but still it has emissions. Now, in both these areas, we talked about investment. Investment is required both in the area of coal, in terms of ensuring that we have adequate coal production and we have adequate transport facilities to take this coal to the thermal power plants. In the case of oil, we are making investments in trying to build huge oil storages, oil refineries. We are expanding our network of oil refineries, because we are not just importing crude oil. We are processing that crude oil, and we are exporting it. And export of petroleum products has become one of our major exports. Okay. So we are earning a lot of foreign exchange that way. Now we come to the second part of your question, that is the green energy. How much alternatives? We have set very high targets, and we have overachieved them, especially in case of solar energy, wind energy also we are doing very well. So these are areas where, yes, there is a commitment by this government to shift and to meet the carbon emission norms, the climate change norms that have been set by various climate conferences, and we are in the process of doing it. But it takes time. We are an emerging economy, as you said. We need energy. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश में शोध और नवाचार के माध्यम से वृद्धि और विकास को सतत बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के मद्देनजर अनुसंधान शोध फाउंडेशन ANRF अधिनियम के प्रावधानों को कल से लागू कर दिया गया। भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेज, शोध संस्थान और R&D लेबोरेटरीज में शोध और विकास संस्कृति को बढ़ावा देने में ANRF महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार ने विज्ञान और तकनीकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर को ANRF का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। गणित विज्ञान, अभियंत्रण और टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और अर्थ साइंसेज, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्रों में दीर्घकालीन प्रभाव के लिए सरकार की ओर से ANRF की स्थापना उच्च स्तरीय शोध, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई है, ताकि प्रत्येक नागरिक को दीर्घकाल में इनका लाभ मिल सके। सुषमा जी, यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और R&D, जहाँ हम अक्सर पिछड़ते नजर आते हैं, हमारे पास पेटेंट नहीं होते और हमें रॉयल्टी लंबे समय तक चुकानी पड़ती है अन्य देशों के उत्पादों को, वहां पर यह जो हमारा नया कह लें फंड एस्टैब्लिश किया गया, किस रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? नहीं, देखिए, आपने खुद ही कहा कि हम इस विषय में थोड़े पीछे हैं। अगर हम पूरी दुनिया भर में बाकी देश देखिए, और मैं विकसित देशों की बात कर रही हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज की बात करती हूँ, लेकिन हमें उनके साथ ही कंपैरिजन करना चाहिए। हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो परसेंटेज है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में है, बहुत ही कम है। और इस वजह से, जैसे आपने कहा कि पेटेंट्स कम आ रहे हैं, हमारे पेटेंट्स यानी जो विश्व का मानक है उस तुलना में हमारे पेटेंट
उतने नहीं आ रहे। उतने नहीं आ रहे, बिल्कुल। मैं आपकी बात में सहमत हूं आपके साथ। तो ये जो इन्होंने ये सरकार ने अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन बनाया है, ये दिस इज समथिंग टू बी वेलकम्ड, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप ये डेवलप्ड कंट्रीज को भी देखें, वहां पर भी सरकार ने मतलब पहल की है, सरकार ने काफी पैसे लगाए हैं रिसर्च में, उसके बाद प्राइवेट कंपनीज आई हैं। तो अभी हमको अगर हमारी सरकार इस विषय में आ जाती है रिसर्च और इनोवेशन में, उसके बाद मतलब हमें उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर भी आएगी, और अगर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इकट्ठे काम करेंगे तो हमारी रिसर्च और इनोवेशन का क्षेत्र बढ़ेगा और हमारे पास काफी नई डेवलपमेंट्स आएंगी जिनके ऊपर हम मतलब वी कैन बी प्राउड ऑफ। राइट, सो यू स्पोक ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स एंड R&D of the private sector, and linking this to the Prime Minister who emphasized that the reforms being taken in the energy sector will make India a global destination for investment in this sector. So quickly, just wanting to understand from you that the private sector coming in and from other countries is also a huge attractive destination for the others? Yes, of in course. The energy yes, sector? of course, R&D? definitely. If they come, if other companies come in and are doing research and innovation here, you will have the rest of the world coming and taking part in this whole process. Then India becomes a hub for research. Right now, it is not a hub for research, and we need to make it so. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। एक और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से हांगकांग का हेंग सेंग सूचकांक शानदार 4% की बढ़त लेकर बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 3.1% की वृद्धि हुई। उधर निवेशकों की बिकवाली से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.5% घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.6% की गिरावट हुई। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.26% नीचे आकर बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां भी मिला-जुला रुख दिख रहा था। समाचार तैयार किए जाने तक लंदन के FTSE 100 में 0.4% की बढ़त थी। उधर बिकवाली के दबाव में जर्मनी का डैक्स 0.1% नुकसान में था। फ्रांस का CAC 40 0.2% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। Taking a quick look at the U.S. markets, all three major U.S. indices ended in the red yesterday. The Dow Jones Industrial Average declined 0.72%, the S&P 500 fell 0.32%, and the Nasdaq Composite Index slipped 0.2%. A look at the oil prices. Oil prices rose today in intraday trade. Brent crude was trading at 0.45% higher at $78.34 per barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude was also trading at 0.38% at $73.06 per barrel when reports last came in. We've spoken about the energy sector, looking at oil prices and correlating to this. So this stability beyond $80, which is now coming in, how does it bode for India? Well, it's very good for India because we are below $80, and this is the price that India can afford right now. And we have also, India honestly has nothing to do with it because we can only watch what's happening in global markets. But definitely the markets are showing that they are not going to succumb to the pressures of the oil cartel, OPEC, which has been trying to cut production quotas in a bid to raise prices. They have tried it during the past year several times, but the oil markets are looking at the economic conditions around the world, which are recessionary. Right. यहाँ पर हम ये मान के चलें कि जो तेल निर्यातक देशों द्वारा एक नीति के तहत दबाव बनाकर तेल के दाम ऊंचे बनाए रखे जा रहे थे, उनके दिन अब लद गए, ऐसा लग रहा है आपको? और ये हमने ये नहीं कह सकते कि लद गए, अभी तक तो आजकल तो लद गए हैं, आजकल की बात। जी। यानी फिलहाल में ऐसा नहीं दिख रहा। फिलहाल तो बिल्कुल ऐसा होता है कि हम प्रोडक्शन कट कर देंगे, लेकिन कोई खास असर बाजार पे नहीं दिख रहा। आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध के लिए सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 10 रुपए बढ़त के साथ 62,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। मार्च अनुबंध के लिए चांदी 120 रुपए कमजोर होकर 70,360 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने चांदी के मूल्यों में नरमी बनी हुई थी। $2,042.50 प्रति औंस पर सोना कारोबार किया जा रहा था। उधर चांदी भी कमजोरी के साथ
$22.40 प्रति औंस पर कारोबार कही थी। बहुत संक्षेप में सोना आने वाले दिनों में ऊपर जाता दिख रहा या नीचे? बहुत संक्षेप में। जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन्स रहेंगे सोने का दाम बढ़ता ही जाएगा। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you, Manoj. Thank you, Gaurav. Thank you, Sushma ji. And before we close, a quick look at the headlines. Key domestic indices rise more than 0.5%. Sensex closes at 72,186. Nifty settles at 21,929. Rapid reforms undertaken by the government making India a global destination for investment in the energy sector, says Prime Minister Narendra Modi. And provisions of the Anusandhan Research Foundation Act come into force. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.